So we'll be discussing the median nerve today with all that background, what we have learned about the forearm muscles. So the median nerve, in the introduction, we call it as laborer's nerve. Laborer's nerve. Because those who are skilled laborers, they are constantly engaged in this kind of action, doing something, washing clothes, screwing movements, whatever. So therefore their forearm muscles are very strong. Our forearm muscles are naturally not so much involved in labor. इसके लिए हम जिम में जाके ऐसे 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 एक्सरसाइज करते हैं, बराबर नहीं? कौन है जिम में जाता है? कौन थे वो दो लड़के मेरे को जिम में मिले? You do this exercise, okay? Krish and Shreyas. So we do this for forearm muscles. But laborers, they naturally do it. हमारे केएम हॉस्पिटल के जिम में ना लोग ऐसे 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 एक्सरसाइज करते हैं और फिर हमारा धोबी उधर से गुजरता था सारा कपड़ा लेके और उसके सारे मसल्स इधर के 5 सुपरफिशियल 3 डीप सब कुछ दिखता था बिकॉज होल डे ही यूज्ड टू बी वॉशिंग क्लोथ्स. Laborers now, these muscles are supplied by the median nerve. Median nerve root value and formation, I'll take it together because it is formed by the union of medial root of median. Okay, I'll start with lateral root of median. Lateral root of median, whose root value is C5, C6 and C7, and medial root of median, whose root value is C8 and T1. And therefore the root value is C5, C6, C7, C8 and T1. The course of the median nerve. The course of the median nerve. And therefore now the course starts in the axilla. The course starts in the axilla. Then from axilla, where it moves to the arm, in the arm, axilla में median nerve was lateral to the axillary artery, third part, right? In the axilla, it was lateral to axillary artery. In the arm, it crosses the brachial artery from lateral to medial side. Lateral to medial side. ऐसा क्यों? Because at the end it is found in the cubital fossa. तो cubital fossa में क्या होता है? It is the medial most structure. You are getting it. Cubital fossa, it is medial to the brachial artery. In axilla it is lateral to axillary artery. That means arm में क्या हो रहा है? It is crossing the brachial artery from lateral to medial side. वो medial side पे आ रही है. पहले वो lateral पे थी artery के, फिर वो medial side पे आ रही है. Okay. So in the cubital fossa, it is the medial most structure. It leaves the cubital fossa. By passing between two heads of pronator teres. By passing between two heads of pronator teres. Pronator teres has two heads. One is humeral head arising from the humerus, and other head is from the one is from the common flexor origin, medial, and other is additional head from the supracondylar ridge. तो वो दो हेड्स के बीच में से मीडियन नर्व जाती है. And after that it enters the forearm. In the forearm, it lies between flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus.
flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. And then it leaves the forearm by passing below, leaves forearm by passing below, or rather enters the hand, enters hand by passing below the flexor retinaculum, by passing below flexor retinaculum. So the course starts in axilla, then it goes to the arm. In the axilla it is lateral to the axillary artery, in the cubital fossa it is medial to the brachial artery. That means in the arm it is crossing the brachial artery anteriorly from lateral to medial side. Then it leaves, in the cubital fossa it is the medial most structure, it leaves the cubital fossa by passing between two heads of pronator teres, it enters the forearm. In the forearm it is between the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. Then it enters the hand by passing below the flexor retinaculum. Flexor retinaculum, which is also called as carpal tunnel. Carpal tunnel. Okay. Therefore, it may get trapped in the carpal tunnel. Carpal tunnel में कुछ inflammation, edema, कुछ fluid जम गया, pus जम गया, तो median nerve पे pressure होगा. And then it supplies. मैंने आपको बोला था 4.5 muscles. तो मैंने अभी book में आपके देखा. आपका recent book बोलता है 5 muscles. It supplies 5 muscles and 3.5 digits sensory. So this is motor and this is sensory. I'm going to talk about this in details, about its supply. So now let's talk about its branches. Let's talk about the branches of the medial nerve. So medial nerve is formed by C5, C6, C7, that is lateral root of medial, and C8, T1, which is medial root of medial. So together they unite to form the medial nerve. In axilla, no branches. In the arm, it gives branch to pronator teres. It also gives branch to the elbow joint and pronator teres. Pronator teres and elbow joint. And then in the forearm, suppose this is the superficial compartment, this is the deep compartment. So in the forearm it supplies flexor carpi, radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis. All these branches, they arise in cubital fossa. All these branches, they arise in cubital fossa. So out of the 5 muscles, it supplies the 4 muscles. यहाँ पे 5 superficial muscle है, उसमें से 4 muscle supply करते हैं flexor carpi ulnaris को छोड़ के. जो हमने ऐसा उंगली रख के बोला था ना, pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, ulnaris. So ulnaris को छोड़ के ये 4 muscles वो supply करते हैं. और जो deep muscles है, for the deep muscle it gives a branch called as anterior interosseous nerve. It gives a branch called as anterior interosseous nerve. ये specially this branch is meant for deep muscles of forearm. कितने हैं deep muscles forearm में? There are 3 deep muscles in forearm: flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus, and pronator quadratus. So it supplies the 3 deep muscles. It supplies the pronator quadratus. It supplies the pronator quadratus. It supplies flexor pollicis longus, and it supplies lateral half of flexor digitorum profundus. So profundus का lateral half will be supplied by medial nerve. Medial half will be supplied by ulnar nerve. तो हमने बोला था profundus कौन सा मसल है? Hybrid muscle. A muscle which is supplied by 2 nerves is called as hybrid muscle.
Flexor digitorum profundus is a hybrid muscle because its medial half is supplied by ulnar nerve and lateral half is supplied by medial nerve. Then it goes below the flexor retinaculum, which is called as carpal tunnel. Carpal tunnel. It goes below the flexor retinaculum and it goes below the flexor retinaculum and it supplies I am just dividing this into motor and sensor. I'll talk about its nerves also later, a lateral branch and a medial branch when I draw a diagram. Here I am just talking about the supply. In motor, it supplies lumbrical 1 and 2. Lumbrical 1 and 2. So 2 muscles. And it supplies 3 thinars. What are those 3 thinar muscles? Abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, and opponens pollicis. So there are total 4 थिनार मसल्स. एक adductor pollicis भी है, वो adductor pollicis is not supplied by median, it is supplied by ulnar nerve. So median nerve supplies total 5 muscles. Total 5 muscles. हम पहले 4.5 सिखाते थे because flexor pollicis brevis, superficial head was by median nerve and deep was by ulnar. आपका current textbook उसके साथ agree नहीं कर रहा है, तो मैं इसके लिए 5 लिख रहा हूँ. 2 lumbricals and 3 thenar muscles. 2 lumbricals, lumbrical 1 and 2, and 3 thenar muscles. And sensory, it supplies lateral 3.5 digits. Lateral 3.5 मतलब देखो 1, 2, 3 और रिंग फिंगर का ये साइड. Lateral 3.5 digits मतलब 1, 2, 3 और आधा रिंग फिंगर. इनका सबका sensory supply will be by median nerve. So median nerve will be supplying sensory to the thumb, sensory to index finger, sensory to middle finger and half of ring finger. So 3.5, lateral 3.5 sensory. And muscle wise it will supply only 3 muscles of thenar eminence and 2 lumbricals. Is this clear? So we talked about median nerve introduction formation, we talked about its course, we talked about its supply. I'm not talking about branches as such, it is the supply. Okay? There is one nerve called as palmar cutaneous nerve. Palmar cutaneous nerve. It arises before the flexor retinaculum, it runs over the flexor retinaculum. Palmar cutaneous branch. ये जो नर्व है ना, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है, तो पहले ही निकलती ऊपर से जाती है, सप्लाइज द स्किन ओवर द थिनर एमिनेंस एंड मिडल ऑफ द पाम. तो कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें मीडियन नर्व ब्लॉक होती है कार्पल टनल के अंदर, उसमें ये नर्व सप्लाई इंटैक्ट रहेगा बिकॉज दिस नर्व passes over the flexor retinaculum. What is carpal tunnel syndrome? When the median nerve gets trapped inside the flexor retinaculum, below the flexor retinaculum. This one now comes above. तो ये आपका internship तक का question है. Which nerve will be spared? Palmar cutaneous. What will be spared in carpal tunnel syndromes? The sensations over the thenar eminence and middle of the palm. Why? Because palmar cutaneous nerve is given before entering the flexor retinaculum. It passes above the carpal tunnel. Therefore it doesn't get trapped. अभी हम relations देखेंगे. Now we move on to the relations of the nerve. The relations में आप क्या क्या डायग्राम ड्रॉ करोगे? एक्सिला का रिलेशन ड्रॉ करना है तो हमारा फेवरेट डायग्राम है पेक्टोरलिस मेजर थर्ड पार्ट में.
teres major, latissimus dorsi, axillary artery. ये सपोज मीडियल साइड है तो ये वेन है, ये लैटरली क्या है, कोरेकोब्रेकियलिस है, पीछे है रेडियल नर्व, इधर है अल्नार नर्व और इधर है मीडियल नर्व. So this diagram talks about all its anteriorly. Spectralis major, medially is axillary artery, laterally is coracobrachialis, posteriorly is teres major. ये उसके रिलेशंस हो गए. देन आपको आर्म का या एक्सिला का हो गया. आर्म का एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है. ऐसे ऐसे निकालो ब्रेकियल आर्टरी और मीडियम नर्व ऐसे निकालो. बस ये है ब्रेकियल आर्टरी, ये है मीडियम नर्व. ओके. Brachial artery and medial. So you have to write this is lateral side, this is medial side. Simple diagram for forearm. But ये अगर आप नहीं निकालते हो तो डायग्राम यूजलेस हो जाती है. देन उसके बाद फोरआर्म के बाद वो कहाँ पे पहुंचती है, क्यूबाइटल फोसा. तो क्यूबाइटल फोसा का डायग्राम निकालो. लैटरली है ब्रेकियोरेडियलिस, मीडियली है प्रोनेटर टेरिस. तो ये है ब्रेकियोरेडियलिस, ये है प्रोनेटर टेरिस और चार स्ट्रक्चर्स. क्या है चार स्ट्रक्चर्स क्यूबाइटल फोसा के, मीडियल टू लैटरल. मोस्ट मीडियल इज मीडियल, देन इज ब्रेकियल आर्टरी, देन इज बाइसेप्स brachii tendon, next is radial nerve. So structures in the cubital fossa. Cubital fossa सब लोग ऐसा हाफ आर्म फ्लेक्स करते हैं तो यहाँ पे जो खड्डा दिखता है that is cubital fossa. उसमें स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते हैं. मीडियल टू लैटरल साइड क्या है, मीडियल नर्व, देन ब्रेकियल आर्टरी, देन बाइसेप्स ब्रेकिया एंड रेडियल. तो लास्ट टाइम मैंने बोला था गर्ल्स you have BF, biceps femoris. बॉयज को जब गांव पे जाएंगे तो पूछते ना क्या भाई कोई मिला कि नहीं, बीबी मिल गई सी. बाइसेप्स ब्रेका, एक नहीं दो, राइट साइड लेफ्ट. तो बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करना. बाइसेप्स ब्रेका. तो मीडियल टू लैटरल साइड क्लियर. तो ये एक डायग्राम निकालोगे आप. फिर आपको फोरआर्म में, सॉरी अभी ये नीचे का डायग्राम आपको दिखेगा नहीं. सो फोरआर्म का एक आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक डायग्राम फोरआर्म में आप निकाल सकते हो. सिंपल डायग्राम निकालो, कट सेक्शन. ओके. ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. दोनों के बीच में मीडियम नर्व ना ऐसे सुपरफिशियलिस के पीछे प्लास्टर्ड होती है. सो फोरआर्म, दिस इज एंटीरियर कंपार्टमेंट, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. उसके बीच में ये है मीडियम नर्व. ओके. और एक डायग्राम हो गया. और एक डायग्राम फोरआर्म में कट सेक्शन में लोअर पार्ट में क्या होता है, लोअर पार्ट में अंडरस्टैंड दिस. इन द लोअर पार्ट जब ये इनिशियली ऐसे होती है बट जैसे ही सुपरफिशियली स्प्रेड चार टेंडन में स्प्रेड होने को जाता है, ये आगे आ जाती है. इन द लोअर पार्ट ऑन द मीडियल साइड देयर इज प्रोनेटर टेरिस. On the lateral side, there is flexor carpi radialis. So not pronator teres. I am so sorry. On the lateral side is flexor carpi radialis. On the medial side is flexor digitorum superficialis. So यहाँ पे medial nerve.
और आगे है palmaris longus, ओके, नीचे प्रोफंडस रहेगा ऐसे। तो ये जो उसके नीचे थी वो बाद में साइड में आ जाती है, मीडियल साइड, ओके। सो दिस साइड इज मीडियल साइड। सो जब नीचे के पार्ट में palmaris longus आगे होता है, कार्पी रेडियलिस यहाँ पे होता है, सुपरफिशियलिस यहाँ पे होता है, और मीडियन नोड इधर, दिस इज मीडियन नोड। ये एक आप डायग्राम निकाल सकते हो। तो सो मेनी डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका मीडियन नोड। सो मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली बोलता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन मतलब यू शुड बी एबल टू ड्रॉ 5-6 डायग्राम। तो लोग बोलते 5-6 इतना कहाँ ड्रॉ। सो यू हैव टू थिंक ऑफ कौन से डायग्राम में यू केम अक्रॉस मीडियन नोड, ओके। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ कोर्स अप्लाइड एनाटॉमी इज कार्पेल टनल सिंड्रोम, जिसमें वो ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के बाद ये 3.5 लैटरल 3.5 का नर्व सप्लाई चला जाएगा, थिनर मसल्स का वेस्टिंग होगा, बहुत कुछ होगा। आपको सेपरेट लेक्चर है मीडियन नर्व पे उसके लिए। सो डोंट वरी, अरे बाप रे सर ने तो ऐसा आधे घंटे में नहीं। अगेन देयर विल बी, बाय नाउ यू मस्ट हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट व्हेन इट इज टॉट, हम लोग, मैं जो है ना, मैं खाली ईंट रख रहा हूँ, उस पर सीमेंट लगा रहा हूँ, बाद में टीचर्स आके उसको प्लास्टरिंग कलरिंग सब करके जाते हैं, ओके। सो नाउ वन थिंग इज, ये ऐसा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से नीचे से जब वो आती है तो लैटरल और मीडियल ब्रांच में डिवाइड होती है। और यहाँ पे है थंब, यहाँ पे है इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे है मिडल फिंगर, यहाँ पे है रिंग फिंगर, यहाँ पे है लिटिल फिंगर। फिर ना उसके ऐसे डिजिटल ब्रांचेस जाएंगे। ये है उसका लैटरल ब्रांच, डिजिटल ब्रांचेस, ये क्यूटेनियस सप्लाई के लिए। अब ये मीडियल ब्रांच है, ये लैटरल ब्रांच है। मीडियल ब्रांच भी ऐसा देता है, ऐसा देता है, फिर वो इधर आके स्प्लिट करता है। मेरा ये फिंगर पे परसों एनेस्थेशिया दिया था, तो यहाँ पे जब एनेस्थेशिया दिया ये फिंगर के लिए, तो दिस साइड ऑफ द मिडल फिंगर ऑल्सो गॉट एनेस्थेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस नर्व। ये एक इंडेक्स फिंगर का एक साइड और मिडल फिंगर का दूसरा साइड, और एक डिजिटल ब्रांच इधर आके स्प्लिट होती है, वो इसका एक साइड, इसका एक साइड। तो पेशेंट बाद में अगर चिल्ली करना, आपने इधर का भी, अरे बाबा ये डायग्राम सेम नर्व है, तो इसको इधर जब एनेस्थेटिक फ्लूइड लगेगा तो ये भी फिंगर ही हो जाएगा, ओके। तो यही नर्व्स फिर एक जन फर्स्ट लंब्रिकल, एक जन सेकेंड लंब्रिकल को सप्लाई करेगा, और यहाँ से ही ब्रांच एक जाएगी और 3 थिनर मसल्स को सप्लाई करेगी। It will supply 3 थिनर मसल्स। कौन से 3 थिनर मसल्स? हाँ, opponens pollicis, abductor pollicis brevis and flexor pollicis brevis. So that's all about the median now. ये थोड़ा सा complicated diagram था. So now I'll do a fast revision. Before that, somebody just go out, check with the sir. Medical मतलब आपको just tell them that sir's lecture is over. HOD sir can be brought in. बोलो मैं आपके लिए रुका हूँ, अब वो सर्वेंट को बताओ। So I'll revise again. We started with the median nerve introduction, that it's a laborer's nerve. It is formed by the union of lateral root of median C5, C6, C7 and medial root of median C8, T1. Okay. Its course starts in axilla, where it is lateral to the axillary artery. It passes through the arm, where it crosses the brachial artery from lateral to medial side. Then it reaches cubital fossa, where it is the medial most structure.
leaves the cubital fossa by passing between two heads of pronator teres. Then in the forearm it lies between flexor, ilium superficialis and लेकिन towards the end of the forearm it comes and lies lateral to the flexor ilium superficialis between and medial to carpi radialis and posterior to pronator teres. Then it enters the hand by passing below flexor retinaculum. In the arm, it supplies 5 muscles and lateral 3.5 digits. So when we discuss the branches, in the axilla no branches, in the arm it gives branch to pronator teres and elbow. Then it supplies this the superficial flexors except for flexor carpi ulnaris and gives anterior interosseous nerve. Anterior interosseous nerve which supplies all deep muscles except the medial half of profundus, which is by the ulnar nerve. Then it goes down. Here you can say that it also gives branch to the wrist joint. Okay, it will give also branch to the wrist joint. Articular branch will be given to elbow joint as well as wrist joint. Then it gives a palmar cutaneous branch which passes above the flexor retinaculum. It goes inside and divides into lateral and medial branch. Together they supply the 5 muscles, 2 lumbricals and 3 thenar muscles. 2 lumbrical number 1 and lumbrical number 2. They are numbered from lateral to medial set and lateral 3.5 digits. ये कुछ diagrams हैं. You can draw a diagram in course for axilla, for arm, in cubital fossa, then forearm, lower part of forearm. और अगर ये सबसे easiest diagram है, most of you will draw this only in exam. But आपको आपका excellence दिखाना सर के लैपटॉप पर. अच्छा ठीक. Then lateral and medial. Okay.